हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रूव दैट द कर्व्स y squared equals 4x and x squared equals 4y divide the area of the square bounded by x equals 0, x equals 4, y equals 4 and y equals 0 into 3 equal parts. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So इस problem के लिए key concept है area between the curves, say function fx and gx, such that fx is greater than or equal to gx in the interval a to b, and area in this interval is a equals integral a to b of fx minus gx times dx. Now with the help of this key concept, let's now start our solution. अब क्वेश्चन में हमारे पास दो कर्व्स है, एक y squared equals 4x and the second is x squared equals 4y, and the other boundary conditions given are x equals 0, x equals 4, y equals 0 and y equals 4. Now let's try to construct the graph. Now suppose ये हमारा coordinate axis है, यहाँ पर x axis, यहाँ y axis, this point is origin, right? And so this goes from 1 2 3 4, यहाँ पर positive axis पे 1 2 3 and 4. Now let's draw the graph. The boundaries given are x equals 0, that is y axis, y equals 0, that is x axis, then x equals 4, so the line x equals 4, so the line looks like this. So this is x equals 4. Now the next boundary is y equals 4, the line looks like this. This is y equals 4, and this intersection point is 4 comma 4. Now we need to draw the parabolas. First is y squared equals 4x and the next is x squared equals 4y. Now to draw the graph of equation y squared equals 4x, understand that this represents a parabola which is concave towards positive x-axis, and also according to the conditions we are only concerned with the part of the parabola that is in the first quadrant. So the graph will look like this, as the parabola passes through origin and 4 comma 4, and again we are only concerned with the part of the parabola that is in the first quadrant. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, parabola will therefore look like this. Now as we can observe, तो ये जो बड़ा square है of length 4 units each, so this square is cut into 3 portions. Let's call this portion A1, this is A2 and this is A3. And हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि we have to prove that these regions are of equal area. So we need to prove that A1 equals A2 equals A3. Now let's first get the value for A1. A1 will be equal to, see, this curve has equation y equals 2 times square root x, and A1 is therefore the region between the curves y equals to 4 and y equals to 2 times square root x over the interval 0 to 4. So A1 will therefore be equal to integral from 0 to 4 of 4 minus twice of square root x whole times dx. Now let's integrate. We therefore have, यहाँ पर आ जाएगा 4x minus 2 times x raised to half का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x raised to half plus 1, that is 3 divided by 2 whole times 2 divided by 3, and limits are 0 and 4. अभी अपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 16 माइनस 4 by 3 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, 2 क्यूब इज 8, एंड माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, यहाँ 0 एंड यहाँ 0, तो 0 आ जाएगा.
So the overall value for A1 is 16 minus 32 by 3 and that gives us 16 by 3. So A1 की वैल्यू आ गई. अभी A2 की वैल्यू निकालते हैं. A2 is equal to, see, if we look at the graph, so A2 is this region and it is the region bounded by two curves, that is y equal to square root x 2 times square root x and the other curve is y equals to x squared by 4. तो इन दोनों कर्व्स के बीच में है रीजन A2. नाउ देयरफॉर एरिया A2 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, सो इंटीग्रल फ्रॉम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक. सो यहाँ पर लिमिट्स आर 0 to 4. नाउ द अपर बाउंड्री फॉर A2 इज द कर्व y इक्वल टू 2 रूट x. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट x माइनस लोअर बाउंड्री क्या है, x स्क्वायर्ड बाय 4 होल टाइम्स dx. अभी से इवेल्युएट कर लेंगे. अभी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाता है, 2/3 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 टाइम्स 4 दैट इज 12 एंड लिमिट्स आर 0 to 4. अभी लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे. सो देयरफॉर A2 विल बी इक्वल टू, सो लेट्स रीराइट, यहाँ पर आता है 4/3 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 12 ओवर द लिमिट्स 0 and 4. अभी अपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 4/3 टाइम्स 4 की स्क्वायर रूट 2 एंड 2 क्यूब 8, सो 4 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस लोअर लिमिट लगा लेंगे, 0 आ जाएगी. यहाँ पर आ जाएगा 32/3 माइनस 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 16/3 आ जाता है एंड द ओवरऑल वैल्यू इज 16/3. सो A2 की वैल्यू भी आ गई. अब A3 निकाल लेंगे. A3 विल बी इक्वल टू, नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, यहाँ पर A3 इज द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल्स x स्क्वायर बाय 4, राइट. सो A3 will therefore be equal to what, integral from 0 to 4 of the area under the curve, right. So this is x square by 4 times dx. तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगी x क्यूब बाय 12 लिमिट्स 0 to 4. अपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 64/12 दैट इज 16/3 माइनस लोअर लिमिट इज 0. सो A3 की वैल्यू भी आ गई 16/3. सो देयरफॉर A1 is equal to A2 is equal to A3 equal to 16/3 square units. And so therefore let's also calculate the area of the square, right. So area of square is equal to 4 times 4, that is 16 square units. And now therefore we can say that the curves y squared equals 4x and x squared equals 4y divide the area of the square into 3 equal parts. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.